No, you can't hear me. Thank you for sharing. A cameo appearance by Mr. Feedback. Thank you for sharing your experience. We really appreciate you, Prime Minister. Prime Minister Frederiksen of Denmark, Europe is at the forefront of moving away from fossil fuels into renewable energy. What can you share from Denmark's experience that might help us accelerate that movement? Well, first of all, I will react very shortly because I have to leave. The program has been a bit... You have a plane to catch. The program is a bit delayed. First of all, I would like to say that reaching our goals is not difficult for a country like Denmark because we are rich and we have a lot of measures and a lot of tools if we have the political willingness to use it. So for me, it's more important and more interesting to discuss how can we ensure that all countries are able to reach our goals. It demands more than anything else, of course, political leadership. I think my colleagues have that, but also reforms of our international financial system. Because if we are not ensuring that we have capital that can be invested publicly and privately, then I don't think we are going to reach our goals. And that is why I'm a little bit, I'm not that into coming as a Dane to share our experiences because I know that everything is easier in Denmark than it is in many other countries. Because of the money. Because of the money. Because of the money. Yeah, of course, because of the money and because everything is easier. So I'm not really sure that I can put anything on the table except for saying that those of us who are privileged have to do more to ensure that all political leaders, all parliaments, all countries have the possibility to invest more because investments, publicly and privately, is what is needed. Therefore, I would underline how important it is to have a reform of our international financial system. And then if I can just give you one concrete example how we work. We are not only facing climate changes and a lot of challenges due to that. We are also, all of us, facing biodiversity problems and a biodiversity crisis. Just a few months ago, we sat around a table for many months in Denmark, gathering our farmers, our NGOs, the employers, labor market institutions, like many countries do now with social partners. We did it on the green transition, with a lot of conflicts on the table, because of course there were a lot of disagreements. And then finally at the end we were able to reach an agreement about changing 20% of the Danish country, shaping a new country because we need much more nature and much more biodiversity. So if I can just put one thing on the table, that should be that we need to engage all the actors, all the social partners and so on in the green transformation of our countries. But first of all, we need more money and more investments and therefore reform of the international financial system. So good to have you. Whenever you feel you need to leave the stage, is it now? Absolutely. Thank you. President Faye of Senegal, you have the remarkable honor and achievement of being the youngest president in the world, I believe. So people often ask you questions about that. But what I want to ask you is about having that knowledge, being connected to young people, the youth. How has that changed the way that you think about digital access in Senegal that might help inform us regarding accelerating the SDGs? Merci beaucoup. En fait, c'est aujourd'hui que je fête mon 6e anniversaire en termes de mois en tant que président de la République. Je viens de faire juste 6 mois aujourd'hui.
Et quand vous êtes élu dans un pays comme le Sénégal, dans un contexte de grand espoir, avec une situation économique quelque peu difficile, les premières réformes auxquelles vous pensez, c'est de baisser le coût de la vie pour soulager les populations. Mais au moment où vous faites ça, en tant que jeune président, vous pensez aussi à la connectivité des jeunes. Parce que autant les populations jeunes ont un besoin vital de se nourrir, autant ils ont ce même... वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से मुलाकात। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान देरीना और गहरे ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर आज़म का तिजारत, सयाहत, तालीम, सरमाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अवामी रवाबित और बाहमी ताउन की कोशिशों में इजाफे। अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। Ease the suffering in Gaza and end this war, where Israel enjoys security and peace and full recognition and normalized relations with all its neighbors, where Palestinians live in security, dignity, and self-determination in a state of their own. Despicable acts of sexual violence, 250 innocents taken hostage. I've met with the families of those hostages. We must also address the rise of violence against innocent Palestinians on the West Bank. गजा की शहरी और यकमाली होलनाक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। गजा में सूरत हाल खराब, मगर सिफारती हल अब भी मुमकिन है। मगरबी किनारे में मासूम फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद को रोकना होगा। मशरिक़ वस्ता में एक और जंग किसी के मफाद में नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का UN जनरल असम्बली से खिताब, कहा लबनान की सूरत हाल का भी सिफारती हल निकालना होगा। यूक्रेन में पुतिन की जंग नाकाम हो चुकी है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो हम खामोश नहीं रह सकते। चीन के साथ मुआशी मुकाबला करना है। Civilians are paying the price in rising death tolls and shattered lives and communities. The international community must mobilize for an immediate ceasefire. Gaza is a non-stop nightmare, and nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink, cannot afford Lebanon to become another Gaza. गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। दुनिया तूफान की जद में है। हमें ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनका हल निकालना है। कशीदगी और तशद्दुद बढ़ने से लबनान भी जंग के धाने पर है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली के इजलास से खिताब, कहा फ़लस्तीनियों के खिलाफ इज्तिमाई सज़ा बिला जवाज़ है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया की आबादी को तबाही का सामना है। दुनिया को मुतबादिल तवानाई के मनसूबों की जानिब जाना होगा। Hundreds of Gazan children died and are still dying because they cannot find a morsel of a dry bread, a sip of water, and a bowl of soup. Oh, human rights organizations, are those in Gaza and the West Bank not human beings? Do children in Palestine have no rights? गजा को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बना दिया गया। आलमी अमन सलामती काउंसिल के 5 अरकान के हाथों यह कमाल है। गजा में 41,000 शहादतें हो चुकी हैं। बराह रास्त मनासिर न्यूयॉर्क से जहां पर पायदार तरक्की के अहदाफ पर SDG मूवमेंट के हवाले से मुबाहिसा वज़ीर आज़म इज़हार ख्याल कर रहे हैं।